Om Shri Ganeshaya Namo Nama. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe. Wherever you are, welcome to Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday evening, green morning, green afternoon, and green evening. Because it's a morning where from my friends, my brothers are joining us all the way from Canada and United States. It's an early morning for them. It's a late afternoon for my entire European friends to whom I was just talking a little while before. Hearty welcome to all of you. And मेरे beautiful भारत में, हमारे यहाँ पर अपनी soil में, we extend a very warm welcome to everybody जहाँ पर भी आप हैं. आप लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम अंग्रेजी में होते हैं, आप हिंदी वालों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं. ऐसा नहीं है. You all are a part of our journey. The only thing is because we have to take everybody with us from the entire globe. That's why sometime you might be feeling कि हम सारी बात अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, बीच में जहां जहां हो सकेगा मैं आपके साथ हिंदी में भी जुड़ूंगा. तो आज वेबिनार है 1673rd 1673वां वेबिनार और हमारे साथ जुड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूर्य विजय शास्त्री कोटामार्ती जी कनाडा से, विकास मल्होत्रा जी कनाडा से, टूरिज्म एक्सपर्ट, टूरिज्म एनालिस्ट, एंड प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी जो मार्केटिंग देखते हैं और सर्विसेज में इनका बहुत इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स से. आईसीएसआई के बिहाफ पर आप सभी का हार्टी वेलकम है. हमारे इंडियन डायस्पोरा, दे आर वंडरफुल, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक. कितनी एफडीआई जोड़ते हैं भारत में और कितना कुछ इनके थ्रू इनोवेशन में, रिसर्च में, लिंकेजेस में, कोलैबोरेशन में भारत में आता है. एंड वी हैव टू इंक्रीज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. ये हम एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं 10 to 27th of September, which is totally dedicated to tourism, और जिस पर हमने टूरिज्म के अलग अलग थीम्स को लेकर डेवलप किया है आपके लिए. और हम हर सप्ताह आपके लिए NRIs के थ्रू कार्यक्रम लेकर आते हैं. So that is something wonderful. We extend a hearty welcome to all of you. Thank you very much for being part of this journey today. Thank you very much for being part over here. आज न्योदू मैम भी जुड़ी हैं वर्ल्ड टूरिज्म वीक में all the way from Arunachal Pradesh, and I wish her a good health and I pray to Almighty that she should do extremely well because she is the vocational teacher for tourism. She is teaching tourism in Arunachal Pradesh. So hearty welcome to her also. She has joined. उत्तराखंड से साक्षी भी हैं. Thank you. मोहित चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत हार्टी वेलकम है. और जितनी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को हम वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम. आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे. सो 2001 चेंबर की तरफ से फीस्ट आया, फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ टूरिज्म. आई एम ग्रेटफुल टू श्री वीके गोस्वामी जी, फॉर्मर सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जिन्होंने भी आपके लिए जीवन में कुछ अच्छा किया हो उन्हें कभी मत भूलिए. इट्स ऑलवेज गुड. ये फीस्ट समय के बाद पोस्ट पैंडेमिक सब कुछ बदल गया. सो इट हैज बिकम फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स फॉर टूरिज्म बिकॉज यू रिक्वायर सॉफ्ट स्किल्स, यू रिक्वायर लाइफ स्किल्स, यू रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स, एंड यू रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्निकल, यू रिक्वायर टूरिज्म स्किल्स एज वेल, जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. और हमारे साथ ममता चौहान उत्तराखंड से, साक्षी देहरादून से, और हमारे साथ जगदीप भगत जी भी जुड़े हैं, who is heading the MICE industry for conferences, convention, trade fair, exhibitions in India. और अभी अभी भारत सरकार ने MICE इंडस्ट्री की एक नई पॉलिसी भी अनाउंस करने के लिए कहा है. So let's wait for that. Let's look forward to that. हमने 10 तारीख को ये प्रोग्राम आपके साथ शुरू किया and we had the first day Indian tourism post pandemic. 11 तारीख को हम NRIs के पास गए, repackaging education and skills post pandemic, how it is to be done. 12 तारीख को पांडुरंग बी थवारे जी, we are so grateful to you, एग्री टूरिज्म, फार्म टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, और हमने टोटल फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर रखा. ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड सिक्किम.
and 45 million plus people. Wonderful art, craft, culture, cuisine, dances, music. They are such an amazing people. Everybody should travel to Northeast at least once. उसके बाद हम फिल्म टूरिज्म पर गए, फिल्म इंड्यूस टूरिज्म पर गए, सिनेमैटिक टूरिज्म पर गए. उस सब चीज को हमने लिया 13 सितंबर को. इट वाज समथिंग रिमार्केबल व्हिच वी ऑल हैव डन. उसके बाद 14 तारीख को भारतीय भाषा का हमारा हिंदी दिवस था. तो पर्यटन के अंदर हमने बातचीत की कि सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली मेक बेस्ट यूज ऑफ योर ओन रीजनल लैंग्वेज. आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी साथ लेकर चलिए. उसके बाद कैप्टन सुदेश कुमार, राकेश माथुर जी, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म. उसके बाद आए रंजन लहरी जी, दैट इज कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म. सुभाष वर्मा जी आए, नेशनल एडवाइजर फॉर IATTE, एंड ही टॉक्ड अबाउट द पिलग्रिमेज टूरिज्म. उसके बाद हमने पिछले सप्ताह, आपको याद होगा, वी एंजॉयड द वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी एंड द वार्मथ ऑफ ट्रायो that is coming from Canada and United States. We enjoyed Vikas Malhotra, Surya, Vijay, Sastri, Kotamarti ji, and Vivek, Shankar, Natarajan. It was a wonderful deliberations. उसके बाद हम आगे बढ़े and on 19th of September, Monday को हमने जगदीप भगत जी के साथ, who is the founder member and the national coordinator of Network of Indian MICE agents, 5,000 से ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े थे. और जगदीप जी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन. उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो माइस इंडस्ट्री को इकट्ठा कर रहे हैं भारत में बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर, बिकॉज दिस इज द एरिया एंड द सेगमेंट व्हिच जनरेट्स अ साइजेबल रेवेन्यू इन 1 or 2 इवेंट्स इटसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट विद. उसके बाद हम अरुण कुमार सिंह जी के साथ, जो डायरेक्टर हैं फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में, जो इंडिया की एपेक्स बॉडी है हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट्स की, उसका अपना इंस्टीट्यूशन नोएडा में है, एंड वी गॉट द डायरेक्टर फ्रॉम देयर. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल. और देखिए, ट्रैवल जर्नलिज्म, आपका ब्लॉगिंग, आपका वीलॉगिंग, आपकी ट्रैवल की जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ट्रैवल जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन के ऊपर हमने एक खास कार्यक्रम किया. ममता चौहान जी का भी आज बहुत स्वागत है. ये बहुत दिनों के बाद आई हैं, आजकल कनाडा के लिए बिजी हैं, ये इमिग्रेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा जा रहे हैं. थैंक यू ममता जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विसेज एक्सपोर्ट के चेयरमैन आए, श्री सुनील एच तलाती जी, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, और इन्होंने पूरा कैनवस दिया. अगर आप इंडिया से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को समझना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू that kindly go through Thursday 22nd September webinar. कोई तकरीबन 9,000 के करीब लोग यहाँ पर जुड़े थे इस प्रोग्राम में, because he gave the value addition over there, what kind of services are being exported from India at this point of time. और हम सबको पता होगा कि श्री पीयूष गोयल जी ने, जो भारत के यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है 350 बिलियन $US इक्विवेलेंट का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्लोजिंग तक. उसके बाद हमने आपसे बातचीत की कि पोस्ट पैंडेमिक में जो प्री पैंडेमिक फिनिशिंग स्कूल था, वो कैसे इंस्पिरेशनल लैब में बदल गया, और हमें किस तरीके से नेचर के साथ, वाटर के साथ, और ग्लोबल की जो वार्मिंग है, क्लाइमेट, और जो कार्बन न्यूट्रल है, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए what kind of a tourism we have to develop world over so that people travel, people enjoy, people get incentives to travel, people enjoy traveling. 24 तारीख को कल हमारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, इतनी शांति मिली. I felt so nice. It was a spiritual tourism. Those who have missed the program yesterday, I would request you kindly go through 24 September 8 p.m. ICSI इंडिया के YouTube चैनल पर देखिए कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में, बुद्धिज्म को मद्देनजर रखते हुए, वेनरेबल डॉक्टर धम्मापिया जी ने, who is the Secretary General of the International Buddhist Confederation, there are 500 million plus Buddhism followers world over. और कल जो इन्होंने अपने पूरे विचार बताए और किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स उसके दिए, वो अपने आप में लाजवाब सुनने वाला है. आप इस वीडियो को जरूर व्यू कीजिए अपने टाइम के अंदर. It was Saturday 24 September World Tourism Week celebrations. कल
26 तारीख को मंडे को रात्रि के 8 बजे मेरे पुराने मित्र, मेरे कलीग, मेरे हमनवाज, मेरे हमजुल्फ, मेरे हमराही, जिनके साथ मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा अपना सफर तय किया, वो कल रात को आएंगे। श्री गौर कांजीलाल, he retired as a deputy director general in the ministry of tourism government of India. We traveled together lots of places and there was so much. He has authored 4 books. So tourism, everyone's business, we are going to discuss, and I have requested him to share his lifetime journey. उसके बाद 27 तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे है। 27th मॉर्निंग को रीथिंकिंग टूरिज्म विद अ होलिस्टिक अप्रोच. We will have the case study of Kurukshetra. Somebody may ask me, where is Kurukshetra? It's in the state of Haryana. And जब आप श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं और आप लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच का संवाद सुनते हैं और लॉर्ड कृष्णा की प्रीचिंग सुनते हैं, तो दैट इज कुरुक्षेत्र. यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी है, यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है. तो डॉक्टर कविता सिंह, who is associate professor, faculty of management, SRM University, ये सोनीपत में है. दिल्ली से जब आप बाई रोड आ रहे होते हैं चंडीगढ़ को, तो ऑन द वे द फर्स्ट बिग स्पॉट यू हिट, दैट इज सोनीपत. तो शी वुड बी टॉकिंग द केस स्टडी विद अस ऑन 27th मॉर्निंग एट 10 AM कुरुक्षेत्र. और हमारा चेंबर बहुत सीरियसली सोच रहा है इसके बारे में. स्टडी कीजिए कि जो स्टीव जॉब्स इंडिया जब आए थे तो उनके बैग में किताब रहती थी, उस किताब का नाम क्या था, क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का किस तरीके से पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ, होलिस्टिक टूरिज्म के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है. वी विल डिस्कस ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म डे एट 10 AM इन द मॉर्निंग. दोपहर को 1 बजे वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन वाले दिन we will be discussing with Amit ji. He is going to talk about digital innovation in tourism. नए सॉफ्टवेयर क्या आ रहे हैं, नए एप्स क्या आ रहे हैं, नए OTT प्लेटफॉर्म्स क्या आ रहे हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे at 1 PM on World Tourism Day celebrations. Because it's a big day, it's a unique day, the entire journey will culminate. और ये है हमारा celebrating World Tourism Day 27 September 2022 को. तो हमको रीफोकस होना है, रीबूट करना है और रिवाइव करना है टूरिज्म भारत में. तो हम लेकर चलेंगे और जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में सहयोग दिया है उनको हम ऑनर करेंगे. ऑल ऑफ यू. और we are also working on basically research and compilation. We are coming out with a book on the World Tourism Day, Rethinking Tourism Post Pandemic. और इसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, टीचर्स में, काउंसलर्स में और ITIs में, पॉलिटेक्निक्स में और स्किल सेंटर्स में, जहां पर भी है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और टूरिज्म को बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक कैसे लेकर चलना है. बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन making education and skill relevant for tomorrow. That would be on the World Tourism Day. We will work out at the 8 PM in the evening when we will be honoring all the dignitaries जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर अपना सहयोग दिया. उन सबको हम रिगार्ड करेंगे 27th evening को. So ladies and gentlemen, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together for tourism. Let's make tourism happening. And today's subject is very interesting. It's a community-based tourism. कि community कैसे role play करती है. Tourists, they come and they visit a particular place. How the community gets a benefit of it. How community exposes or displays or projects its culture, its art, its craft, its cuisine, its dances, its music, its social norms, everything. And how tourists in a responsible way behave over there. So that is sustainable tourism, which we all have to take into consideration. जो local stakeholders हैं, they are basically, we have got people, those are looking after, the visiting tourist to their state at that point of time. And as far as tourists are concerned, they could be visitors also, they could be tourists also. I'm not getting into technicalities, who is a visitor, who is a tourist, वो 24 hours वगैरह की definition में मैं नहीं जा रहा हूँ. Now community based tourism के अंदर basically क्या क्या होता है
and what exactly is the benefit which goes to local community, and how tourists should be responsibly taking the visit to that particular place while respecting their art, craft, culture, and their value system, and what is do's and don'ts, particularly when you're visiting a particular community. And ultimately, we have to see whether the local community is getting benefited or not. That is something very important. It should be a win-win situation for both, for tourists also and the local communities also. Both should feel very happy that they, tourists should get the gain of the experience and the locals should get some economic benefit, so that the community as a whole, they all can develop, they can move ahead. So strategy 2030, what could be the priorities and how there can be community-based tourism, how there can be a responsible tourism, how there can be a responsible tourist behavior post-pandemic when they are visiting a particular place, how do they have a sustainability and everything. So ladies and gentlemen, with that today, while dancing, while celebrating, while feeling happy, because before World Tourism Day, this is the program which is coming, you may call it on the eve, 2 days before actual happening of the World Tourism Day, and that is community tourism. And we extend a very hearty welcome to our brothers, non-resident Indians, those are abroad, Indian diaspora. We are proud of them, and we should always have win-win situation. They should also feel happy and welcome when they visit India. And माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक एजेंडा दे दिया है on his visit to Europe that हर भारतीय प्रवासी जो डायस्पोरा है वो अपने साथ कम से कम 5 टूरिस्ट को, अपने नेबर्स को, कम्युनिटी के लोगों को, बाकी लोगों को भारत लेकर आए. Can you imagine what kind of a tourism we can promote in India? With these words, join me in extending a very hearty welcome today to Shri Vijay Sastri Kotamarti ji, who is the financial analyst, and he's from Canada. Mr. Vikas Malhotra, he is the tourism analyst from Canada, and Vivek Shankar Natarajan ji, who is joining us, who is our advisor, and who is also based out of Texas, and he's also with us. Let's start the evening, and we give the baton to biological clock, and we request Vijay Shastri Kotamarti ji to set the context from his vision, and thereafter we will go to Vikas ji, and then of course Vivek ji will be summing up entire thing. Please go ahead. Hearty welcome to both of you, all three of you, the trio. Namaskar. Namaskar. Thank you, Dr. Sharma. I'll make my presentation both in Hindi and English so that I could hear you saying that listeners को हिंदी में भी सुनने का अवसर हमें देना चाहिए. So bearing that in mind, I will be speaking in English as well as in Hindi. Wow. तो शुरुआत में इससे करूँगा कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी को टूरिज्म से कैसे फायदा हो सकता है और कैसे होना चाहिए. So a great example is here in Canada itself. You know, we have a number of tourists coming to Canada, especially there are many beautiful places to see in Canada, जैसे Niagara Falls, जो विश्व का सबसे बड़ा और बेस्ट मीन्स हाईएस्ट पे टूरिज्म के लिए जो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं. That is one area where tourism is very big in Canada. And just in the month of July, because June, July, August, September, these are the months in which there is summer here and it's really beautiful here in Canada. So all across the country, the tourism flourishes. Or in the month of July, 6 million tourists Canada को आए हैं, and out of that, 2.184 million are the non-residents, and then there are some who have come from the US and many other countries. So अब community-based tourism किस तरह लोगों को फायदेमंद है और क्यों होना चाहिए.
take the example. I'll take the example of Canada because I live here, and I would like everybody to know that how it benefits the community of that particular place. Taking Niagara Falls. Niagara Falls is located in the province of Ontario, which is one of the most economically contributing to the economy of Canada. And in that, St. Catharines is there is a township called Niagara, in which is in that township is the falls of Niagara Falls, and there at least out of the 2.184 million that must have come in the month of July. At least I can say 40% of that, which is about 800,000 and 900,000, should have come or may have come to Niagara Falls. Because there are many other places like Banff in Alberta, Vancouver, Victoria, काफी जगह हैं जहाँ पर टूरिज्म है. It is not that only Niagara Falls को आते हैं, Canada जो भी आते हैं हर जगह पे जाते हैं. So in total, the visitors were about 2.184 million. So I'm taking the considering that 40% of the people came to Niagara Falls to see and visit Niagara Falls. उससे फायदा क्या होता है? So in the township of Niagara, with so many people coming, there are hotels. So naturally, the hospitality industry is being benefited, and there are many visitors who buy different types of mementos and other things which they want to take back to their country to show to people कि मैं नायग्रा फॉल्स गया हूँ, यहाँ से मैंने ये आपके लिए लाया है और ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है. So bearing all that in mind, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं. Then there are many other फॉर्म्स जिससे जो भी लोग खरीद रहे हैं वो लोकली जो कम्युनिटी है उसको फायदा होता है. दे पे दैट लोकल कम्युनिटी पेज टैक्सेस टू द लोकल गवर्नमेंट, एंड similarly in all the other parts of the country also. Canada fortunately is the second largest country in the world in terms of size, and it has a lot to offer for tourism. So वो 2.184 million जो मैं बोल रहा था that have come in the month of July, the non-residents, उसमें काफी लोग हर widespread पूरे देश में गए हैं. So all the communities are being benefited. So community-based tourism is a very important thing. और भारत के लिए especially हमारे देश में तो इतने जगह है देखने के लिए कि हम बोल ही नहीं सकते हैं. और हर जगह, जैसे if you want to say places of worship like Varanasi, Allahabad and Rishikesh, there are many Tirupati, हर जगह पे अपने अपने स्थान हैं. And then there are many beautiful places like Jammu and Kashmir, and then there are places like Delhi, Agra. So ये सब tourism के जगह हैं. और जब लोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके स्पेंड करते हैं तो उस कम्युनिटी को फायदा होता है. So I would like to just, being a chartered accountant, I just want to communicate that it benefits the community of that specific place, in addition to, of course, benefiting the country as a whole. क्योंकि जब कम्युनिटी डेवलप होता है तो पूरा देश डेवलप होता है. एंड हर कम्युनिटी अगर उनके रेस्पेक्टिव एरियाज में टूरिज्म प्रमोट करें कि उनके पास क्या है टूरिस्ट के लिए, तो पूरे देश को फायदा होता है. सो दैट आई वुड से दैट्स माय context on the community-based tourism and how it is being, how it is in Canada. And I understand that in 2019, I have the figures that more than $104.9 billion came to Canada in tourism. तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म से कितना फायदा हो सकता है और कितने कम्युनिटीज को उससे फायदा हो सकता है. So back to you, Sharma ji. This is my first great first round. Yes. First round of boxing. Yes. Yeah. Second round. I hope it's not boxing. It's just information. No. It's called positive boxing, shadow boxing. ठीक है. So
Vikas ji, we will have you thereafter, Professor Vivek Shankar Natarajan ji, and this is the intro round, and we should just give the brief introduction. I'm sorry to share that Professor Vivek Shankar Natarajan ji's family, his daughter and his wife, they both are into COVID and they are not well, and he has to look after them and he has to leave after 15 minutes. So only thing is that I pray to Almighty, they should recover faster, quickly, and everything should be fine because he is a very positive and a God-fearing person. So Vikas ji, let's have intro from your side and then we go to Vivek Shankar Natarajan ji. Sure. नमस्कार. मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि मैं जितना ज्यादा हिंदी में वार्तालाप कर सकूं मैं करूंगा, but I'm not so used to it, but I will try my best. नहीं मिक्स कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मिक्स पैक होएगा. हाँ जी. और एक और बात है विकास जी, आपके शुरू करने से पहले लाइव चैट के ऊपर YouTube के ऊपर देख सकते हैं आप 1000 people are watching this particular program from the world over. It is 1K. At this point of time, when this program is going, it is 1K, 1000 people. So we are working very hard. All of us, the community is building now. Okay, Vikas ji, please go ahead. So because ye intro hai round, I've got many points. This is basically up my alley, this subject. Community, and I will talk more after in round 2. But I want to tell you one thing, ki community, let's break it down into 2 components. Unity. Let's just think about that कि community मतलब कि हम सारे लोग इकट्ठे हों और ये रखें अपने ध्यान में कि जो 1 + 1 होता है, it is not 2. Community में 1 + 1 11 होता है. अगर हम उस चीज को ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो we can create miracles. विजय जी ने कनाडा का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया. मैं समझता हूं कनाडा में रह के कि जो पोटेंशियल इंडिया में है वो पोटेंशियल कहीं नहीं है. तो इंडिया की जो बात है, जो इंडिया का टूरिज्म है, मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज आई वाज बोर्न इन इंडिया एंड आई वाज ब्रॉट अप इन इंडिया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स देयर इन द हार्ट, बिकॉज मैंने देखा हुआ है इंडिया और मैं देखता हूं यहाँ पे जो लोग हैं, कम्युनिटी जो है वो इतनी फॉरवर्ड अगर आती है इकट्ठे, तो वी कैन क्रिएट वंडर्स. टूरिज्म सेक्टर में एक और चीज है कि अगर हमने स्कूल में एक टर्म सुनी होगी या वी वुड हैव स्टडीड, इट्स कॉल्ड रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट क्या होता है कि यू थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड एंड इट फॉर्म्स एंड यू नो the waves, or you know, like some circles, they actually form and they go more and more and more. So community has to plunge itself in that pond to spread the awareness like a ripple effect. और उससे obviously फायदे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट होगी, अवेयरनेस होएगा, सब कुछ होएगा, वो सब उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं. बट मेरा मानना ये है कि कम्युनिटी actually creates lots of things and we all have to think together on the same platform. So I will not take more time on round number 1. Let's go to Professor Vivek ji, and I wish his family a speedy recovery as well. And when we come to round 2, there will be 2 or 3 points I would like to speak about this too. Sure. Thank you very much for being short, crisp and to the point. Professor Vivek Shankar Natarajan ji, आ जाइए. और आज आप तीनों के सम्मान में हम लास्ट में एक गाना भी बजाएंगे आपके लिए. चंडीगढ़ एक नया शहर है, नित्य प्रगति के धारों का, जो 1994 में बनाया गया था, जिसके पात्र विकास मल्होत्रा जी भी हैं. चलिए आइए. प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी, could you kindly unmute your mic please? I think he might be looking after the family. I would request him once again because he had come and that time I told him कि आप 2 मिनट के बाद आ जाइए because then he has to go. तो मैंने कहा आप आइए, बातचीत कीजिए और फिर चले जाइए. आज हम कम्युनिटी टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनाडा से विजय शास्त्री कोटामार्ती जी और साथ में विकास मल्होत्रा जी, और हमारे साथ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी. तो इट इज ए ट्रायो, इट्स ए ब्यूटीफुल ट्रायो, क्योंकि हर रविवार को हमारा NRIs का कार्यक्रम रहता है.
तो एनआरआई के कार्यक्रम के अंदर हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं और उसी प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपना कोटमार्ती जी, आप आगे अपने विचार रख सकते हैं, बिकॉज आई गिव अ कॉल टू हिम। आई थिंक आई विल चेक अप वंस मोर, बट कई बार होता है कि आपके पास में कुछ और कमिटमेंट्स भी होती हैं। सो आई विल जस्ट ट्राई वंस मोर। वो पहले आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। So he might have gone to medicine, give medicine or something. I'll just check up on that. Sure, Sharma ji. हाँ जी, आप Actually, बोलिए। travel is the forte of Vikas ji. So, what I would suggest is, I have said a lot about. आप हमें फाइनेंशियल इनपुट दे दीजिए ना ट्रैवल में। वो तो हमने जरूर दूंगा। Let what I'm saying is, let Vikas ji say something right now, क्योंकि मैं उसके बाद I would like to just conclude. I will have to. Okay, sure. So let Vikas ji say something, because he has a lot about tourism. So let him say, then I will speak after it. विकास जी, let's have you. और अगर बीच में विवेक शंकर जी आ जाएंगे, then you would be kind enough to accommodate him. Please go ahead. Yes, absolutely. हाँ जी, please go ahead. So I want to come back to the awareness. So I was talking about the ripple effect, कि how the awareness spread. और होता क्या है कि we got to think in like from a bird's view, कि हम सबके पास, हम सब एक human beings हैं, हम सबके पास एक common kind of bent of mind है। वो common bent of mind क्या है? We all want to see beautiful places. We all want to see the nature. We want to see beautiful, and how can we see it? We got to associate ourselves with beautiful human beings. तो हम सबके पास 24 hours है। Let's just think rationally कि बातचीत हो गई, अब what is the action? What are we supposed to do? So the very first thing what we all can do, sitting wherever in the world you are, आजकल तो everywhere you have Wi-Fi and everything, you just have to spend 120 seconds, or we send so many jokes on WhatsApp and text and this and that. सिर्फ 2 मिनट के टाइम में, एक दिन में, we will actually either send or we will share something about a destination. I would say start from India, because we are talking mainly about the India as well, and to promote India. और क्या है कि कोई beautiful landscape है or something, what it will do, it will create a ripple effect in the person's mind कि wow, look at this, beautiful, और वो inspire होंगे। अभी हमारे पास इतने सीरीज आई हैं नॉर्थ ईस्ट में। I've never been to North East, but एक बारी एक क्वेश्चन आया था, वेबिनार नंबर आई थिंक 970 72 था कुछ, और डॉक्टर सर, you had asked me, anybody who can guess which is this place, I will give you 1000 rupees. एक फोटो आई थी और मेरा आंसर उस पे चैट पे था साउथ अफ्रीका, और मुझे लगा कि ये साउथ अफ्रीकन फॉल्स हैं, ये those are the falls because I've been there and I know that place. And I thought maybe it is that. And then you come up to us and then you say, no, this is our beautiful Nagaland. And I was shocked. I was like, look at this. So ऐसे ही, please spend, I request humbly, please spend 2 minutes of your day in inspiring another human being. और वो दिन के बाद, आप प्लीज गो अहेड, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, ओके, प्लीज गो अहेड। So वो दिन के बाद और आज के बाद और आज तक, I still want to go to Northeast because I got so inspired. It's so beautiful. It is so nice. So वैसे ही, I would request everybody to share these beautiful moments that you've been in your life, moments that you are aware, because tourism brings a lot of positivity in your mind. Tourism inspires you. Tourism gives you a relaxation in your mind, right? Normally जो ये meditation music होते हैं, they are all nature based. If you see the videos, there will be trees and rivers and mountains. वो क्यों होते हैं? Because those are the effects on a person's mind in a positive way. So this is one thing I want to bring. और एक और चीज है, this also leads us to a very famous saying, each one teach one, or each one plant one. So when we talk about each one plant one or each one teach one, that what are we doing? We actually are saying कि तुम किसी को पढ़ाओ मतलब ये नहीं कि तुम बुक्स के साथ आओ, तुम at least
एक awareness दो उनको कि भाई look, I have been to Assam or I've been to South India, look at the beautiful river and the backwaters and the Kerala boat and the elephant ride. It is absolutely going to create a positive effect. So community jahan tak hai, that is basically that is joining hands with each other is what I really wanted to say. Or bahut easier to do it. We just have to have the right mind to make sure that it happens. We have to put into action rather than just talking about it in words. So ye mera round 2 ka thoda sa I wanted to share my inputs on these lines. विवेक शंकर नटराजन जी, अगर आप आ गए हो तो देखिए, ज्वाइन कीजिए. आर यू देयर? Okay, if he is not there, let's go ahead to Vijay Shastri Kotamarti ji. Thank you, Dr. Sharma ji. And now coming back to community-based tourism, क्योंकि मैं केन्या में भी 10 साल था एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ that how tourism can develop communities, and because that is the subject, this is all the things that we are discussing today is in relevance to the community-based tourism in India. मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे पता चल सकता है कि हम हर कम्युनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उस कम्युनिटी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. Giving reference to Kenya is just another way of putting how community-based tourism can develop and help the community as well as the country. So coming to Kenya में भी काफी जगह हैं, and like Vivek ji, because you were saying, there are people go to any specific place to see things, something new. जैसे केन्या में मसाई मारा, world's famous safari is out of Kenya. तो कई लोग आते हैं, जो भी आते हैं, पहले तो of course capital city Nairobi को आते हैं. Nairobi is a beautiful city and that is the capital of Kenya. So सब वहाँ आते हैं, तो there is tourism and there is Nairobi National Park and a number of things which are within Nairobi. So that way उस community को जो capital city है tourism पड़ता है. Then from there they go to Masai Mara, which is again in the middle of the forest. जंगल के बीच में लोगों ने अच्छे होटल्स बना के रखे हुए हैं, तो लोग जाके वहां रहते हैं और वहां से फिर वहाँ ओपन वैन्स होते हैं. They're called matatus there, but it is an open air van in which people go and watch the wildlife. You can see lions, herds of elephants, a number of things. And उससे फिर मसे लोग कैसे जीते हैं. There are many things which they see, and then there is another place called Tree Tops, which is in a place called Nanyuki, and then there is a beautiful coast city of Mombasa and Malindi. ये मैंने छोटे से डिस्क्रिप्शन में पूरे केन्या में क्या देख सकते हैं आपको बताया, और हर जगह पे वो स्पेसिफिक कम्युनिटी को फायदा होता है. अगर मोम्बासा लोग जाते हैं तो मोम्बासा में कम्युनिटी टूरिज्म के कारण ग्रो होता है. अगर वो मलिंडी जाते हैं तो मलिंडी ग्रो होता है. नन्यूकी जाते हैं तो नन्यूकी ग्रो होता है. और या मसे मारा जाएंगे तो वहाँ के लोग को फायदा होता है. सो सिमिलरली इन इंडिया अगर आप देखें, हमारा तो इतना बड़ा देश है, इंडिया इज सच ए बिग कंट्री, और हमारे इतने कल्चर हैं. देयर इज सो मच दैट वी कैन शो, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट, व्हिच वी आर फॉर्चुनेट दैट एटलीस्ट थ्रू ICSI based webinars we are able to see a lot of northeast even without reaching northeast. लेकिन मेरा तो यही विश है कि लोग वहां जाके देखें, बिकॉज वर्चुअली जो हम देखते हैं उसमें तो सिर्फ थोड़ी सुंदरता दिखती है, लेकिन जब आप रियली जाके विटनेस करोगे तो फायदा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग द रियल,
And the second thing is that you will be helping the communities also. आप खुद जाके वहां पर देख सकोगे और वहां की communities को tourism के कारण फायदा होगा. So my request is go to Northeast. In fact, my sister and brother-in-law used to live in Sikkim, and I had visited that place, and it's a beautiful place to visit. So community-based tourism is very great, and in India there is no need to even say कि that will help. And जैसे Prime Minister Modi जी का vision है, we all should bring more and more tourists to India and make sure that every small village or a town that has things to show, let them show, and let that community grow and let the country grow. That would be my statement. I'm so grateful. I'm so grateful. Thank you. I think Professor Vivek Shankar Natarajan ji could not join because of the family. I tried to reach him number of times on the WhatsApp also, but maybe the challenges are there. We only pray to Almighty for his family early recovery. Now, as a mark of respect, Gulchan ji, yes, please. I can briefly join on audio. Is that okay? Okay, sure. Your voice is more powerful than your visual. No worries. Sorry, this has been a little bit of a. No worries. No worries. Please go ahead. So anyway, I've listened with some level of detail to the two V's before me. So you had Vijay ji and Vikas ji, and then you're putting Vivek after everybody. So that's good. So unless we have victory and unless we make progress, we will not get the knowledge. So God. we are V3, and we are also V3. We are all the three people together from the Northern American continent. It's a V3 community. We are one community. No, actually, it's very nice to speak to them. And so anyway, I think I concur with most of the ideas. There are only two things I just want to place on record since we are on tourism, and I reiterated these points last time also. We should definitely have a separate segment on diaspora tourism. The reason is the Indian diaspora is so well spread, and I think in a way we are already doing that. But the Prime Minister's vision is putting a lot of emphasis on the diaspora as an engine of tourism, because he's saying you bring 5 people. No, he said this even when he was in Houston for the Howdy Modi. He said you bring 5 people. So I think his message was there, but then after that with the pandemic, we had to put a kind of a pause button. But how do diaspora people play a role, and how can the local Indian chambers play a role? I think we need to bring them all more on a platform. And I think maybe we should do it soon, but maybe even during Pravasiya Bharat Divas. The other one is, India has honored a lot of folks of Indian origin and even non-Indians. Maybe can they also contribute to the tourism campaign? Because you see, again, as a brand, we have to sell India as a tourist brand. And a lot of things that are positive. For example, we are still an oasis in a desert right now, with all the other countries around us in the neighborhood not doing so well. Of course, we might have to reach out and help them. That's another story. But I think we are relatively one of the safer places to visit. Both from a health standpoint and a political and economic standpoint, we are well connected. These are all advantages that we have right now that we should put together. And I think that is where the NRIs and the diaspora can play a role. The other one is, even within the diaspora, how do we get more of them traveling? We already mentioned that last time, was the idea of more direct flights. I think a separate segment needs to happen on these. These are two things that I want to reiterate, because as we speak about tourism, I think we also have to talk about the ecosystem, the multiplier effect. What are the things that can trigger tourism? And I'm sure both Vikas ji and Vijay ji will concur with me on this. And I saw Vijay ji was mentioning a lot of pilgrimage, Tirth Yatra. This from today, Navratri starts, and Navratri ke baad sare festivals aa jate hai. That's a very beautiful time. We also are going to see the more of the cooler season in India. It's a good time for people to come. And how do we press that button so that we get more people to come? We had also talked a little bit about wedding tourism, and I think Vikas ji had mentioned that. But I think if we can give more focus sessions on those,
because our idea is to put the seeds for the next few months. So I'm just telling you, we just need definitely something about the airlines, the direct flights. What are the challenges and what are the opportunities? Where are some new cities that we can have direct flights from India to US? That is a segment we need to deliberate. And multiple stakeholders are involved, but I'm sure if you put that in place, that could spur the tourism. The other one definitely is what I would call as the wedding tourism or event tourism. And you're also talking spiritual tourism. I totally agree with you. Since you talked about Kurukshetra, I have been involved for the last 4 years for attending their Bhagavad Gita Jayanti. I have attended it one in person, thanks to our mutual friend Gulshanji, Dr. Tejinder Sharmaji, he's the head of the department of the Commerce Department, and he's a big pioneer in pulling people from multiple sectors. And for last 2 years, we have done it on Zoom, but he's telling us, please come here. So having these kind of conferences also has been very helpful to bring people across from India and beyond to Kurukshetra, and I've seen how much multiplier effect it has in a tourism perspective. So I think we should definitely have those Tirth kind of things. And, probably you had mentioned about marketing research, probably doing more specific segments on each of these cities or each of these places, along with a little bit of market research, would probably be much more topical and well addressed. What we have addressed today is a very big picture, big tent, big umbrella kind of a deliberation, which is very important. But I think we go more into specific sectors. So thank you so much. We will be, Gulshan ji, I can see, aapke aankh se pata chal jata hai, we are almost there. And, I'm sorry I'm not there in person. I'm today in a Akashwani mode, not in a Doordarshan mode. But I'm glad you gave me the time. So with that, I will close with a prayer. Because Navratra starts, I'm going to stop with a prayer. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trembake Gauri Narayani Namostute. Ya Devi Sarva Bhuteshu Matru Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. Om Jai Mata Ki. Let us wishing you all a very happy Sharan Navratri, and hopefully things get better going forward. And we pray to Durga Mata and of course Bharat Mata that we are all safe and sound. Thank you, Gulshan ji. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी। शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ते हैं छतरपुर से, खजुराहो से, पन्ना से, उस एरिया से, और आप ही के देखिए सुझाव के ऊपर हमने अपने प्रोग्राम में अपने भारतीय भाइयों को जो अब्रॉड हैं उन्हें भी निवेदन किया, और आज सबने हिंदी में संबोधन किया। तो आप भी प्रसन्न होने चाहिए और अपने और भाई बहनों को सबको हम लोग लेकर आए। और अब जाते जाते एक खुशबू नुमा 1994 में हमारे चेंबर ने जो एक गीत बनाया था चंडीगढ़ पर, भारत का गीत तो टूरिज्म का आप सुन चुके हैं, भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में आपके, पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके। लेकिन आज हम आपको चंडीगढ़ का सॉन्ग बनाएंगे जिसके साथ विकास मल्होत्रा जी की यादें जुड़ी हैं, प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी की भी जुड़ी हैं, और अगली बार हम विजय शास्त्री कोटामार्थी जी को भी ले आएंगे, अपना ब्रीफ केस भर के लेके आएंगे, क्योंकि ये फाइनेंस में डील करते हैं और बहुत अच्छे से। तो आइए चलते हैं, एक 1994 में जो हमारे चेंबर ने गीत बनाया उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज से सोचिए 6 और 22 28 साल पुरानी यादों में हम लोग चलते हैं। एड खत्म हो जाए और ये यहाँ पर शुरू होगा। क्योंकि कल सुबह से बारिश हो रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ एक नया शहर है, नित प्रगति के भारों का, कितना सुंदर मेले यहाँ कुदरत के शोक नजारों का, कितना सुंदर मेले यहाँ कुदरत के शोक नजारों का।
चंडीगढ़ एक नया शहर है नित प्रगति के धारों का कितना सुंदर मेले यहाँ कुदरत के शोक नजारों का कितना सुंदर मेले यहाँ कुदरत के शोक नजारों का। तो बेसिकली मैं उन यादों को आज ताजा कर रहा था जहां पर विकास मल्होत्रा, उसके बैचमेट, उसके कोर्समेट्स और उसके साथ के सभी फ्रेंड्स, उस पूरे ग्रुप में जो चंडीगढ़ के पीछे भी आपने बाइसिकल्स पर देखा, वो पूरा ग्रुप था इन लोगों का रिसर्च के लिए, टूरिज्म के लिए। सो दैट इज समथिंग फैंटास्टिक। विवेक शंकर जी को भी आज पंजाब यूनिवर्सिटी के पराठे और बाहर का एरिया नजर आया होगा याद से, क्योंकि वहां पर गांधी धाम भी हमने आपको बाकी चीजें भी दिखाई। और हम विजय शंकर कोटामार्थी जी को बाकियों के साथ आमंत्रित करते हैं, चंडीगढ़ विजिट कीजिए। डू विजिट चंडीगढ़ whenever you can make it. It's a beautiful city. It's a neat, clean, serene city. एंड आप देखिए, हम अपने बैकड्रॉप पे भी इंडिया टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को, विच इज मेड फ्रॉम द असॉर्टेड मटेरियल्स। आपकी आवाज नहीं आ रही विजय शास्त्री जी, क्योंकि आपका माइक म्यूटेड है। हाँ, मैंने ही म्यूट किया था क्योंकि आई वांटेड टू एंजॉय द टोटल ब्यूटीफुल सीन्स दैट यू आर शोइंग ऑफ चंडीगढ़। मैं तो चंडीगढ़ गए वगैरह मैंने देख लिया, बट लाइक आई सेड, पर्सनली देखना अलग चीज है। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जरूर आऊंगा और मैं जरूर चंडीगढ़ देखूंगा। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। हर रविवार को हमारे जो भाई बहन जो इंडियन डायस्पोरा हैं, अब्रॉड हैं, उनकी तरफ से एक विशेष कार्यक्रम आता है। हालांकि प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी ने सुझाव दिया है कि इतवार शाम की बजाय अगर ये प्रोग्राम शनिवार शाम को हो तो कैसा रहेगा। इसके ऊपर इंडियन डायस्पोरा विचार कर सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं और उसके हिसाब से आगे प्लान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। Deepest gratitudes and thanks to all of you for having joined us today. Look forward meeting you to the next Sunday, अगले रविवार